Hey guys, good evening. I hope I'm audible. Okay, I'm opening up my video. Looks like, yeah, I'm audible. Great, guys. Good evening again. Apologies. So, we're going to start at stated 9 p.m. So, anyway, I have message in the chat that we'll be starting at 10 p.m. only. So, I had some personal work, so couldn't start at 9 p.m. So, anyway, we'll be most probably going live from 9 p.m. tomorrow onward. So, today, let's take it at the same time. Great. So I hope people have started joining in and they're doing well. A very warm welcome to one and all. A very good evening. Right. So as part of our today's agenda, again, we'll be doing the Leetcode problems only. So we will be starting with where we left yesterday. Right. So we'll be taking up the questions and we'll be solving it live here on the Leetcode. So that's the agenda for today's class. And again, a warm welcome to everyone whosoever is part of our chat today. Great. So let's quickly start. So again, just in header. So as always, I'm monitoring my chat, guys. Right. So please do put up your question in the chat. So let's try to interact as much as we can. So because that always interests, that makes the class more lively, right? It should be a two-way communication, not me talking here. Right. Great. So let's do that, and that's our agenda for the day. Hey Ayush, good evening. Thank you for joining in. Yes, why not? So we can do question number 49. Okay, so we'll take that. Not a problem. Cool. So again, warm welcome to everyone. As always, great guys. So let's start. Let's quickly start. So let's start with a basic round of introduction. As always, my name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I've been in industry for almost 9 years into multiple domains. I was part of manufacturing sector, banking, automobile, and then right now I'm in telecommunications. So multiple domains, right? So we have. You can definitely ask me a question related to your domain area. So if you have any specific concerns regarding the domains and all that, so do let me know your question. Also, along with that, I'm a motivational speaker too. So I take up industry sessions. I talk to students regarding their career, jobs. So do feel free to put up your questions, guys, so we can always interact. Right. Great. Subjects, Python, SQL, data science. That's what we'll be doing. Objective will be to cover as many questions as we can. So in Python, we are doing the questions for the competitive programming from Leetcode, right? So we're doing as much of questions for our practice, right? And then on the SQL, we are also doing the same thing. So we have covered the open questions. Now we are into the premium questions. We have anyway started solving the premium questions on SQL. That's basically going over the weekends, right? And we did a lot of questions this weekend. And likewise in the data science, we have covered visualization on Seaborn, NLP using NLTK as well as SPACY. So that's what we have done so far. And then we'll be discussing about some other good statistical techniques, and also machine learning will be coming up soon for the data science part. Right. Great. So, okay, Ayush, yes, medium. Okay, fair enough. We'll do that. No problem at all. And Salman, good evening. Thank you so much for joining in. So I hope guys have started joining in, right? So let me just quickly wrap up the mandatory promotion, guys. So you know that it is mandatory. You cannot skip that. So great. So you have a code right in front of your screen, guys. Python 10. You can use this code Python 10 to get a free bonus Relevel sample test paper. So what is that, right? So many times candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. It could be like you don't have a better degree. By that I mean not having degree from the tier A universities, or might be having the poor networking, right? So they don't know the right set of people to ask for a referral. So again, could be a very potential reason to lose out on the job. Also, the resumes with which you are applying is not really standing out from 100 other applicants. Could be a reason that your resume is not basically having the right keywords. Also, it could be a reason which is totally beyond your control, right? And also along with that, you're applying to a number of jobs, but still you're not getting even a single interview call. Very practical problem, guys. I would tell almost everybody faces this. And to cater these issues only, a Relevel has been introduced by Unacademy, which is India's first test hiring platform, helping you to get your dream job, right? So here you're purely dependent on your skills and talent, nothing on any sort of degree or people networking. So if you're skilled enough, if you're knowledgeable enough, you should be getting your dream job. So how does it work, right? It's more of an
assessment platform where you will be asked to go through an assessment, like more like a questions, like an examination, right? And the only expectation from you here would be to get the best score out of this assessment, right? So that's the only expectation. So basically, if you're skilled enough, if you're knowledgeable enough, you should be able to get the good score, right? And that is the only expectation here. So nothing on any sort of degree, right? And once you have the right scores with you, once the scores are revealed, it will be shared also internally within the platform, so within the tie-up companies, and based on your score, the companies will start reaching out to you, right? So that's how simple it is, right? There are certain other benefits also if you participate in the Relevel platform. Those include at least 50 plus companies hiring directly from the Relevel platform. Those includes the top startups and also the unicorns, including ENY, Upgrad, Cred, Razorpay, Urban Company, and many more. At least 1,000 plus open job positions right now across 3 different portfolios, business development, front end, and the back end development, right? And multiple sub roles also available within these, like, I mean, we'll talk about that anyway later. And the good part is it's completely online, so you're not paying, basically you're not going out anywhere to be physically present to be part of this test. You can take this from the comfort of your home, right? And the really good thing is this is completely free. You can attempt this for no cost. You're not paying even a single penny to be part of this test, right? The only expectation here is to finish the entire test in a single day's time. So that's the only expectation, and that day could be of your choice. And once you have given the test, the scores will be revealed in a week's time, right? And it's an assessment, so there is a qualifying score as well. You're expected to get at least 70% of the marks to start with, but in any unfortunate situation, if you are unable to get that 70% marks, we can always retake the test, but that can happen only after 30 days of your first attempt, right? So be watchful of that. On the contrary, if you are one of the top scorers in a particular category in a month, right, you will be awarded with some exciting goodies also. That includes MacBook, iPhone, and all that. So with this Relevel, you are in a unique position, guys, to invite interest from companies instead of hunting for your own opportunities, right? It's more like once you have given the test, sit back and relax. The companies will start reaching out to you post your scores are revealed, right? Registration is also quite easy on the Relevel platform. So here you can see there are the very first thing you can look from the screen would be to choose a test of your choice. Those include business development, front end, and the back end development. So multiple sub roles like the customer engagement associate, relationship manager in business development, Angular developer, web developer in front end, data engineer, back end engineer in back end. So multiple roles, skills, depending on your requirement, you can choose the test. The next would be choose the slot, right? So book the date of your examination. So slots for your examination. So once you have chosen the date, the last would be to fill up your demographics, like the full name, email ID, birth year, current state, along with your gender. And at last, you have an option of a referral code here. So most of a promo code. So you can just mention the promo code Python 10 here. So if you can use the code Python 10 at this right place, you're going to unlock a bonus sample test paper for you guys. Do not forget to use the code Python 10. So if you use the code Python 10, that's how the dashboard should look like for you once you log in. So you have the practice tab here where you can see an option of the sample paper. You can download this sample paper and just be prepared with the exact replica questions which you can expect in the real examination. Right, so that's how it works. So guys, do register for the Relevel platform today if you are anywhere looking for the job actively, right? So this is a win-win situation for you. You're not paying even a single penny to be part of this test, right? So at least try it for once, right? So at least try it for once and do register for the platform today. Guys, also we have an official Telegram channel. I hope you know that. So please do join this channel as well. That's going to be the one place stop for you for all of your upcoming queries on the schedules and all that. So with this, guys, do like and share the video. If you feel that you're getting benefited, that's the least I can expect from you because everybody has their own time limit. So we invest time, we put our efforts. So that's the least I can expect from you to at least like the video if you really get benefited by this, right? So do press the like button, guys. So with this, we are into the problem solving. Let's start solving. Meanwhile, I think we have one question from Salman sir. BSc वालों के लिए helpful होगा job के लिए? क्यों नहीं हेल्पफुल होगा यार? बिल्कुल हेल्पफुल होगा. बीएससी वालों के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? I mean, अल्टीमेटली अगर आपको जॉब टेक्निकल में करनी है तो बीएससी से क्या मतलब है यहाँ पे? अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपको लगता है कि बीटेक वालों की जॉब पहले लगेगी बीएससी वालों से, देयर विल बी सम
requirement prerequisite which you cannot really do about it. But अगर आप skilled enough हो, अगर आपको Python आता है, तो I mean nobody can stop you from getting a job. So BSc and BTech, this I won't say this is gonna be the showstopper for you anyway, right? So ऐसे मत बोलो BSc वालों के लिए helpful होगा क्या? अगर आप BSc वालों हो तो मतलब आपको अगर job चाहिए in technical field in Python development या फिर data science for example, right? So skills पे ध्यान दो. That's gonna be your Python. That's what you should be targeting. है ना? Cool. Let me just quickly open up the screen. Just a minute, guys. Let me pull up the Leetcode. Just a minute. Let me know. Okay, we have a browser here. I hope my screen should be visible to you. Right. So Tanuj sir, I am attending class after 3 classes. Can I stay? Absolutely, Tanuj. We can. You can obviously stay. So the objective of our sessions is basically solve as many questions as we can. Right. So we are anyway not following any particular course or anything. So we are just solving as many questions from Leetcode. Right. So you can obviously stay. So no problem at all in that. Right. So feel free to even put up your questions and we can always do that. Great, guys. So let me know if my screen is visible. I'm just facing some technical challenges here. Right, I hope my screen is visible. Right, should be visible. Yeah, okay, thank you Tanuj for confirming that. Yeah, great. So let's just proceed. Okay, so we have solved till 15th yesterday, right? So that's what we submitted last. Okay, anyway, I think somebody told me one question to choose, right? So what is that question number? Okay, Ayush said 49. Okay, so we can start with 49. I mean, if people are okay with that, so we can start with 49 or else we can still stick to our own sequence and start solving. I'm okay with both the approaches. I think 49 is here, group anagrams. So if nobody is commenting, guys, just yes or no, if you're comfortable with 49, we can take that or so whatsoever. Right, so just quickly, guys, if you're okay with 49, let's just do that. Yeah, let's start with 49 only, why not? Cool, let's quickly check our question here. Okay, so that's a 49 and let's stick to our topics. It's gonna be my inputs, it's gonna be my output, and then have my constraints, and then we'll be having a flow, right? So my basic flow of my question, let's do that. So the question says, given an array of strings strs, so we have an array of strings here, strs, okay. Group the anagrams together, okay. So, okay, you can return the answer in any order, okay. So input is my array of strings, that is strs, okay. And then group the anagrams together. So we have to group the anagrams together. Fair enough. So you can return the answer in any order. So constraint may no order constraint. Okay, nothing as such. So anagram ka definition. Okay, an anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. Okay, so for example, let's look at this. So STRS में क्या है? Eat है, T, tan, 8, nat, bat. Okay. So मैं समझा नहीं. Why it is like this? Bat. Okay. So hold on. Okay, so you can return the answer in any order. So what do I'm supposed to do? Given an array of strings, group the anagrams together.
Okay, I got it. So basically bat का कोई anagram इसके अंदर में नहीं है. Okay, from this list itself I have to group the anagram. Okay, I got it. Fair enough. So 8 का EAT है यहाँ पे, that is fine. Then we have TEA again from the same letter. So we have this grouping here. Okay, fair enough, guys. That's fair enough. So we have to group the questions, group the individual anagrams for in the same array of lists. Okay, so output is I just got confused. So from the same list, like we can just create a list of lists, like list. We can do list of lists. Cool. That's what we are supposed to do. That's what we'll be doing from the same list of lists. Right, absolutely, Ayush. Great. Yes, I got it. So basically here वही same चीज़ है, tan and nat same letters हम use कर रहे हैं, and yes, at least once we are using the same letters, and this is what we have the group of 8, eat and t, है ना? Also, I could see some edge conditions here. Like for example, I have to also take care of empty strs, and also single character strs. ये दो edge conditions मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना? So we have to be mindful of this. Cool. Chalo, quickly, guys. Whosoever is thinking, Ayush, if you have any thought process in this, है ना? So let me know what are you thinking. Just give me some few English sentences, right? I don't want to go and just start coding blindly. Give me at least some headers so which you are thinking, जिसको हम जिस तरीके से sort कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, append कर सकते हैं, something, है ना? So give me some logic. So how you are thinking to solve this up. So I'm just thinking of one logic in my head. I can just think of that. We can start doing it in that way also. But again, still, I would really like you guys to give me some logic. जो आपके दिमाग में चल रहा है, what do you think we should be doing in this use case? Quickly, guys. Okay, Prashant says we can use dictionary for this question. Dictionary, okay. We can make key of strings rearranging characters in sorted order. Okay, हाँ, sorted करके correct कर सकते हैं, and then keys भी बना सकते हैं, right, बना सकते हैं. Yes. In fact, your logic is absolutely good, Prashant. Yes, we can do that. But in fact, I was thinking sorted तो कर लेते हैं. We can make the key of strings after sorting. Definitely कर सकते हैं. Rearranging the chord sorted order में आप जो बोल रहे हो. But dictionary के बजाय मैं simple से भी कर सकता हूँ ना. Simple अगर मैं एक string ही बना लूँ. Just maybe we can create नहीं actually in fact dictionary की mapping तो बनानी पड़ेगी हमें. Okay, yes, I think you are right. Still in that case अगर मैं आपका logic लेता हूँ sorted वाला, dictionary मुझे बनानी पड़ेगी. Yes. In fact, I'll try to solve with your logic only, Prashant, because I think you are the first one who commented. So we'll use that logic only. I think I'm able to get what you're trying to say. So we'll try to solve with your logic only. We'll try to create a dictionary first, and then we'll try to sort, and then we'll try to append. Okay, we'll do that. So we'll try to solve it with your logic. Is anybody else? Okay, Ayush says individual words को sort कर लिया and same words new list में add कर लिया. हाँ, बिल्कुल, exactly. I think this is what also Ayush, Prashant is also talking about. So individual words को हम sort करेंगे पहले, and then उसकी mapping बना लेंगे dictionary के अंदर, है ना? Because anyway हम तो एक anagram के अंदर हमें उसको map भी तो करना पड़ेगा ना for individual words. So I think आपका भी logic same, Ayush. It's just like for individual sorted strings, ना? We have to keep on appending. We have to create a dictionary का mapping kind of a thing. So for each word, what all anagrams are there, kind of that. So I think we'll go with that. So I think both of your logics are fine, just more fine tuning. So let's try to take this logic only. Chalo. I'll try to solve with this only. So we have flow. So what we'll do, we'll create the dictionary. We'll create the dictionary. For example. So what we can do, so create dictionary for anagrams, है ना? And then basically anagram के एक बार में dictionary बना दिया, and then उसके बाद क्या कर सकते हैं, grouping कर सकते हैं. So grouping की list बना देंगे. So in fact what Ayush is saying, so groups में groups के लिए मैं क्या करता हूँ, एक list बना दूंगा जहाँ पे मैं add करता जाऊँगा characters को, right? And then यहाँ पे मैं क्या करूँगा, for each of my strings, so just like for a loop, for each of my strings I'll be doing the sorting of my characters, and then उसके ऊपर anagram के ऊपर we'll just keep on appending, है ना?
and then keep on appending this list. और क्या कर सकते हैं हम इसमें? चलो, let's try to solve. I think ये basic flow तो हमें समझ में आ रहा है. I think people are able to understand this. We have few more questions. ये क्या क्वेश्चन है यार? जावा में क्या पूछेंगे? ये जावा आई थिंक आपने रोहित कल भी क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर जावा. यू कैन ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू अदर मेंटर हु इज टेकिंग द जावा क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म. कोई टिप्स टू डू गोल्डमैन सैक्स में प्लीज? Okay, so I mean again, I cannot really comment on any specific company to be honest. Goldman Sachs अगर आप स्पेशली उनकी बात कर रहे हो, so if I'm not wrong, there are at least 6 to 8 rounds for interview and different. इसमें 2-3 important चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी about your projects, about the case studies, and then about the group discussions. So I'm not sure which level you're talking about skew night, right? But again, 3 to 4 rounds जो आपके specifically हैं. I mean talking about the coding rounds, then आपका case studies, then आपके project reviews, then the group discussion. So ये 4 तो मुझे पता है, multiple rounds भी हो सकते हैं. DSC के लिए बेस्ट टिप्स या DSC के लिए हमने अगेन कुछ स्टार्ट नहीं किया है अभी. सो वी हैव नॉट स्टार्टेड स्पेसिफिकली ऑन DSA. अगेन इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर DSA. There is, I think, one mentor already taking the DSA classes. You can always follow that, but we'll be starting the DSA as well here. So this is nothing, still not the right platform. Goldman Sachs, I think skew night. I think I've answered your question. Okay, let's come back, guys. Cool. Quickly, चलो अभी let's try to solve this with the same logic. मैं एक बार यहाँ पे जगह बना लेता हूँ. चलो ठीक है. So अभी हमें सबसे पहले क्या बोला? एक डिक्शनरी बना लेते हैं. एक एनाग्राम की एक डिक्शनरी बना लेते हैं. So we have an एनाग्राम करके we have a dictionary here. So डिक्शनरी की फंक्शन है. So I have an anagram here. अब मेरे को इनफैक्ट ग्रुपिंग भी चाहिए. सो एनाग्राम का ग्रुप बना देता हूँ. सो एनाग्राम ग्रुप जिसमें मेरे को सारे वर्ड्स होंगे. सो दैट्स गोना बी माई डिक्शनरी बेसिकली, राइट? सॉरी, दिस गोना बी माई लिस्ट जहाँ पे मैं वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा, राइट? अब नेक्स्ट में क्या बोला? फॉर ईच ऑफ माई स्ट्रिंग्स मेरे को इसमें मैपिंग करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद मुझे उसको सॉर्ट करके अपेंड करना पड़ेगा, राइट? लॉजिक समझ में आ रहा है? एनीबडी हैज एनी इशू इन द लॉजिक, लेट मी नो. सो और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर ईच ऑफ माई वर्ड, सो फॉर वर्ड इन माई my strs, so for word in strs basically I can do that. Mera for all of my word, right, for word in strs I have to find out my sorted list, right? So I have to, what can I do? So string को sorted कर देता हूँ. If I just do a sorted string for now. So sorted string would be what? The sorted string would be I can just do a sorted also, but sorted of my word. So if I do a sorted of my word, right, so can I just still get okay, let's take that. Maybe I am still speculative of, let's keep it like this. Let's see. I think I'm still confused whether this will work. Let's see. Okay, and now I have my list. So from all of this list, I want to get, right? So I want from the anagrams dictionary, I want to get my list basically, right? So can I do this? My sorted string. So just my string list, for example. String list would be what? So I need to get it from my dictionary, right? So I need to find out whether anagram has this. So anagram dot get. And that get would be of my individual sorted string, right? So if that is there, so we can keep it in the list. So that will be giving me for each of my string, right? Now, in this case, if this string of my list value is none, I mean, this can be none, right? So for the first instance, it will be none. So if this is none, in this case, we can say that do not append anything. So just create an empty list in this case. So we do not want to create on top of this. So what can we say? So we can just say in this case my anagram of my sorted string, in this case it should be empty. Correct? Making sense, guys? So if anagram is, अगर मेरा ये string of list जो है मेरे को value यहाँ से नहीं मिलती है,
then in this case I'm gonna append, I'm just gonna add this sorted string as an empty list, right? And if this is not true in this case, so if this is not true, so now in this case what I would write, so anagram dot sorted ring will become what? In this case, anagram dot sorted ring will become dot append specifically what will become my actual word, right? So I'm gonna append my word here. Make sense, guys? This logic is simple, eh? Nothing fancy. I mean, I'm still trying to use the same logic what Prashant said. So we're trying to sort the list based on the dictionary mapping and just keep on appending it, right? So if we do not find this, we're gonna anyway add इसमें कुछ भी अगर वो find नहीं करेगा तो empty हो जाएगा ना value. But if it finds that, I'm gonna append the actual value here. So here in the dictionary, I'll be keep on appending the word, है ना? So उस word को मैं append करता चला जाऊँगा. ये मेरे पास आ गया. अब मेरे को क्या करना है? अब नेक्स्ट चीज क्या बनता है मेरे पास? So, अब मेरे को इस सो बेसिकली फॉर ईच ऑफ माई, अब मेरे पास सॉर्टेड स्ट्रिंग बनता चला जाएगा, राइट? तो सॉर्टेड स्ट्रिंग है. सो मैं सॉर्टेड स्ट्रिंग है ना, तो सॉर्टेड स्ट्रिंग है ना. सो सॉर्टेड स्ट्रिंग, अब मेरे पास इस एनाग्राम्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आते चले जाएंगे, राइट? So in this anagrams, I'll be having multiple values, correct? ये तो बेसिकली डिक्शनरी होगा. अब डिक्शनरी से निकाल के मैं लिस्ट में बना देता हूँ, सिंपल है ना. ओके, सो नाउ आई हैव इट इन डिक्शनरी. सो नाउ बेसिकली फ्रॉम दिस डिक्शनरी आई वांट टू कीप ऑन एडिंग द वैल्यूज इन माय लिस्ट, राइट? दिस व्हाट आई वांट. सो आई हैव इट इन डिक्शनरी नाउ. सो फॉर माय स्ट्रिंग्स इन माय एनाग्राम, है ना. सो दिस इज व्हाट आई हैव. सो फॉर स्ट्रिंग्स इन माय एनाग्राम, दिस व्हिच इज अगेन अ डिक्शनरी, what I have to do in this case, so this value, so anagram group जो हमने बनाया था list, in this case this will be appended with what? So for each of my anagram, so anagram के अंदर मेरे को individual strings जो होंगे उसका value, correct? So this what I have to keep on appending. Cool, make sense, guys? आई थिंक लॉजिकली तो मेरे को सही लग रहा है. यही तो चाहिए था ना, मैं यही आउटपुट तो आई थिंक यही चाहिए था हमें, और तो कुछ मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. फिर से देख लेते हैं. गिवन अरे स्ट्रेस द एनाग्राम ग्रुप द एनाग्राम्स टुगेदर, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, राइट? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स टू अ डिफरेंट फ्रेज, टिपिकली ठीक है. एंड देन ओके, सो हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया है ना. सो लिस्ट्स के अंदर मतलब चले जा रहा है, करेक्ट है? तो आई थिंक वी आर डूइंग दिस. सो बिकॉज वी आर टेकिंग स्ट्रिंग्स इन एनाग्राम. हाँ, टू लुक्स लाइक गुड टू मी. एक बार इसको रन करते हैं. आई स्टिल हैव सम डाउट. लेट्स ट्राई टू रन दिस. अच्छा, एक सेकेंड, मैंने तो लिस्ट में तो वो रिटर्न ही नहीं किया ना. ओके, सो मैंने रिटर्न नहीं किया अभी यहाँ पे, माय बैड. आई थिंक रिटर्न भी होगा यहाँ पे. सो रिटर्न क्या करना है मुझे? रिटर्न इस एनाग्राम ग्रुप को रिटर्न कर दो. मीनवाइल देखते हैं क्या एरर आया है. अनहैशेबल टाइप लिस्ट. ओके, ये आई लाइन 35 में. ओके, सो ये लिस्ट की तरह हो जाएगा, राइट? तो क्या करें इसको? मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक इशू हो सकता है. वी कैन डू, व्हाट कैन वी डू हियर? सो बेसिकली टेकिंग एज अनहैशेबल टाइप लिस्ट है ना यहाँ पे, तो मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूँ. लाइक इफ आई डू लाइक दिस डॉट जॉइन, सो नाउ आई एम जॉइनिंग ईच ऑफ माई वर्ड्स. We can do it like this, right? So we can just join the characters and make it a string. I think this should be fine. Let's see. Right, makes sense, guys. Okay, simple. I mean, ठीक है, वो list unhashable हो गया था, तो we just converted, we joined the characters together because वो list के अंदर values हो गई थी उसकी, है ना? Cool. Great, guys. Any questions in the logic? Simple है ये तो. In fact, आयुष, I think आपको समझ में आया होगा, है ना? हाँ, right. Very good, Nair. Yes, absolutely. So we just joined these sorted words together, and even I was suspecting that this might give me an error. So, but yeah, let's see. I think now this has been sorted. I think Ayush asked this question, right? Ayush, are you comfortable? Did you get the logic?
Right, Prashant, yes, absolutely correct. Yeah, sort word and add in dictionary with value as empty list. हाँ, absolutely correct. So empty में lists में अगर present नहीं होगा तो empty डालेंगे, बिल्कुल correct. Sliding window, हाँ मतलब I mean per list में append कर रहा हूँ. I think somehow yes, you are right, Ram. Tuple बना देते हैं. हाँ, right, ठीक है, तुमने देख लिया. Quick question, guys. Anybody has any issue in the logic? I think it's simple only. Nothing very fancy in this. Simple logic ही है. कुछ है नहीं यार, सिंपल है इसमें. देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है. मैंने क्या करा है, सिंपल एक डिक्शनरी बना दिया और एक ग्रुप बना दिया. अभी कोड पे मत जाओ, ठीक है, लॉजिक पहले समझो. लॉजिक मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट द डिक्शनरी जहाँ पर गया ना, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच ऑफ माई वर्ड्स, देखो यहाँ पे फॉर ऑल ऑफ माई इंडिविजुअल वर्ड्स आई एम फर्स्ट सॉर्टिंग द वर्ड एंड ऑल्सो जॉइनिंग इट बाई कैरेक्टर्स. सो मैं बेसिकली स्ट्रिंग की तरह वापस से बना रहा हूँ, ठीक है. एंड देन मैंने क्या करा हुआ, मैं इसको सॉर्टिंग करने के बाद इफ इट इज प्रेजेंट इन दिस एनाग्राम डिक्शनरी पहले से, तो उसकी वैल्यू को उठा रहा हूँ, ठीक है. अगर वो नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इट इज नन, आई एम अपेंडिंग एज एन एम्प्टी वैल्यू. और अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली मैं इस डिक्शनरी में अपेंड करता चला जाऊंगा वहां पे, है ना, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो. करेक्ट. यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर स्ट्रिंग्स इन एनाग्राम, अब बिकॉज मेरे पास डिक्शनरी में आता चला जाएगा यहाँ पे, तो अब इसके बाद मैं इसी को डिक्शनरी को एक लिस्ट में कन्वर्ट करता चला जाऊंगा, है ना, सिंपल है. Cool, great. So I think let's try to submit this also. If there's any edge condition, we'll take that. There should not be any, but let's see. Right, cool. Right, it's actually okay, it's very fast solution. Okay, I think Rushikesh, time complexity wise, again guys, I'm still very logically wise. Time complexity यार देखो, time complexity I would say still say my stake is not towards time complexity. I'm one of the person who is really, I would say, least concerned when you talk about the time complexity in terms of your competitive programming. When you specifically look for the interviews, right? I'm still talking to you guys. There are multiple approaches in which you can solve this problem, right? So again, there are two objectives in which you can look at this problem. The first is if you're looking for a job, specifically looking for clearing the examination, clearing the coding rounds, right? So this is the place where you should be looking for the approach, the logic. Okay, so and then once you have started working in your business, like, and then in that case you have a lot of things with a lot of constraints, then look for the time complexity. So do not get very much confused with the time complexity right now at this stage of your career when you're looking for the job or clearing the examination or clearing some coding rounds, right? So that is where I'm more concerned about. Making sense, Rushikesh? Skew Knight. Okay, but anyway, let's proceed. I think we have solved this question 49. Any other preferences, we can take that, but still, if not, we can start with the 16th one. Cool, great. So let's quickly solve this new question. Shortest palindrome. Nair says shortest palindrome. पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है यार. We'll see that. इसके बाद करें इसको. मेरे को क्वेश्चन नंबर बता देना नायर. It'll be easier for me to take that. ठीक है. Meanwhile, let's start it. So inputs we have. We'll solve this one. We'll take your question. No problem. Outputs, and then what we have. So output we have then constraints. And we have flow, right? Let's see. Given an integer array nums of length n, okay, so we have an integer array nums of length n and an integer target. Okay, so we have an integer array nums of length n. Okay, so this is my length n. Okay, and an integer target. So target is basically 1, an integer target. Okay, cool. So we have integer array nums of length n, that's my input, okay, and then we have an integer target. So that's my two inputs I have. Find 3 integers in nums. Okay, so out of these, what I want 3 integers in nums such that the sum is closest to the target. Closest to the target.
ओके ओके, चलो डिफरेंस कम होना चाहिए, लॉजिकली समझ में जो आ रहा है मुझे. Okay, so find three integers in nums. Three integers in nums, so the sum is closest to the target. Okay, so we have to see how we can do that. Okay, so return the sum of the three integers. Okay, so I want the sum of these three integers. So basically I have to return the sum of these three integers, right? Cool. So you may assume that each input would have exactly one solution. That's fair enough. Cool. So numbers, I have this, target is 1, output is 2. Okay, how come? The sum that is closest to the target 2 is -1 plus 1 plus 2. Right, cool. So 2, okay. And now I have 0, 0, 0, target is 1. So output is 0, right? So again 0 condition का एक edge है यहाँ पे, look for 0 condition, है ना? So एक हमेशा भी रहता ही है ये एक edge condition है 0 वाला. 214, okay. ठीक है ना यार, we'll take that. 214 question, we'll take that. चलो, okay, so I think ये input output constant constant clear है, ठीक है. Again guys, quickly, इसमें again I would look for some of the heads up from you guys based on your logic. इसमें क्या समझ में आ रहा है? Just give me some logic, है ना? Again, I'm not asking you to code for me. I'm just asking based on this question, what can you think about it, right? So what can you exactly think about the problem? आप इसमें क्या सोच सकते हो? What is coming in your mind right now? I mean, just give me a few pointers. I'll take one of the other approaches and then we'll try to solve it. Again guys, quickly, what is the logic here? Are you able to understand the question, and are you able to get a hint of a logic? What can we do in this? Quickly guys, just give me a few English sentences. Prashant, okay, I think कल वाला 3 sum का logic. Right, okay, वो left pointer right pointer जो हमने करा था, हाँ, right, absolutely, I remember Prashant, yes, right, I remember that, yes, J and K हमने करा था उसमें, and then yes, I remember that, okay, I remember जहाँ पे हमने n-1 करा था right pointer के लिए and i+1 करा था left pointer के लिए, right, yeah, got it, I remember that, I think yes, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, same logic से भी कर सकते हैं, I remember that, we can do that, चलो, we'll take that logic only, we'll do that. 2-pointer approach, bilkul Rishikesh, we'll take that approach, so I'm okay with that. Anybody else? And I think people are following this logic, right? So we did this same question yesterday, I remember, 3 sum wala problem. इसमें एक alteration, I think 3 sum वाले में we were finding a triplets, right, if I'm not wrong, वही वाला question था ना. But again we'll see इसमें कैसे कर सकते हैं, थोड़ा alteration तो होगा ही, obviously new question है, we'll see that. Cool. चलो, I think उसमें हमने कैसे करा था, देखो, let's try to think about it again. So same way है, जो हमारा list है यहाँ पे, list of values जो है, उसको again हम same तरीके से sort कर सकते हैं. We can simply sort the list first, and then sorting के बाद right, min absolute value, exactly सही बोला आपने प्रशांत, yes, min absolute value last में check करना पड़ेगा हमें. So here in this case what can we do? हम sorting कर सकते हैं लिस्ट को, अपनी entire list of values को. sorting के बाद we can define the closest का logic, है ना. so closest का logic में एक बार एक simple define कर देंगे, looping कर देंगे, and looping for each of my values, entire range पे हम looping करेंगे, left right pointer बनाएंगे उसको लेकर के, and then जो pointers की हमने logic लगाई थी for each of my pointers, उसमें sum वगैरह match कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब basically वो flow. अब एक flow लिख देता हूँ यहाँ पे. So same कल का approach लेते हैं. So we'll sort the list anyway, this is important. So sorting के बाद हम क्या कर सकते हैं? So we have what? So we can define the closest का logic. So we can just take a closest dummy to initiate, है ना? And then closest dummy के बाद हम क्या कर सकते हैं? For my range of values. So for my range of values पे loop, and इस looping में हम क्या करेंगे? We'll define the left pointer, and also we'll define the right pointer, right? So we'll define these 2 pointers,
and then left right pointer के बाद क्या होगा, again same logics for each of my pairs. So now in this we'll be looking for the pairs, right? So we'll be looking for pairs now. So pairs के अंदर same while loop के through ही कर सकते हैं. तो with the while loop we'll be doing what? So we'll be finding out my closest sum. So will be sum, sum of integers, right? Somewhat I would say equal to or my target. So this is where my logic would come for this, right? So we'll check this, right? And then again definitely हमारा उसी में absolute mean वगैरह हमें करना पड़ेगा, है ना? So yeah, cool. ठीक है. I think logic wise we're pretty much fine. Same logic है, guys. We did this question yesterday, so we'll try to solve this the same logic. Okay, so Rishikesh Prashant is great. So let's start solving this, guys. Same logic से ही करते हैं. Okay, so we have what? So we have the nums here. So basically my list of numbers. So I have my list of numbers defined. So I'm gonna use the same thing. So I'll just sort this nums.sort. Sort कर दूंगा तो मुझे I'll be having this list का sorted का values, है ना? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? For each of my closest pair. Okay. So अभी हमें क्या करना है? Closest जो है मैं मान के चलता हूँ कि हमें 3 का pairs निकालना ना. So basically out of all the 4 I need the sum of 3. Closest 3 है ना? हाँ, 3 closest. So मेरे को 3 closest चाहिए, right? So I can just define by default, for example. So just keep on comparing, right? So compare करने के लिए what we can do, we can just define that my 0th, first and the second character, for example, the nth character is giving me this value, the closest value to initiate with. So what can we do in this? So what I'm saying here is, so just defining initial closest value, okay, to compare with. So what I'm doing is, so this would be what? So I can just define initial closest would be what? Initial closest, I can define this as my my actual numbers, right? So nums of my 0, and then I can define my nums of my hey Ashish, hello. Nums of my 0 plus nums of my 1, and then I can say nums of my what? So nums of my I can say n minus 1. Let's do it like n minus 1. So it's my last character. So we can have this. And now for each of my elements, so this is my initial closest value. So right. So now what I'm defining is, so for each of my closest okay. So great. So how can we do that? So range, for my range का values क्या होगा इसमें? So if my n values है, if I have, so and I have the n values. Now I'm taking 3 out. So how can we do? So in this case, the ranging should happen from where to where, guys? Quickly, I think it should be for I in range. For I in range of what? I can take 0 and 0, and then we have my my length of my nums. Okay, this whole thing should be minus 2, right? This is what I should be having. So this is going to be length of nums minus 2. That's what the range should be. Cool? Yes, because we have to take the 3 digits out, right? So that's going to be the second integer from the last. Great. Okay, so for I in range 0 of 0 till length of nums minus 2. So length of my nums jo hoga, we'll take that. And then in this case, what I'll be doing? Now for each of my I values, I have to define my pointers. So let's take again j and k lete hain, left and right pointers. So j will be my left pointer. Left pointer क्या हो जाएगा? As always, we'll be taking I plus 1, है ना? So we'll be taking I plus 1 as my left pointer, and right pointer क्या लेंगे? N minus 1. So n minus 1 will take the same pointer of my I inverse. So j, we initiated j with my I plus 1, and we taken k as right pointer as n minus 1, है ना? ठीक है? So we have the 2 pointers here. Now for in this case, till the time j left is lesser than k, because हम अगर left बड़ा हो जाएगा k से तब तो problem है, right? Because that's where I have to break it out. So till the time, so right, so while left is less than k, so j is less than k in this case for the pointer, I'll be saying what? So now in this case I'll be taking the sum. So sum of my integer. So
temp, so just take the sum, for example, or just take current sum. So current sum would be what? So current sum would be what? My nums of my I plus nums of my j plus my nums of my k. Cool. So this is gonna be my current sum. Current sum where I'll be having defining of j is less than k. Okay, we have a question here. Q-Night say why length minus 2. Okay, this is a good question. Prashant, Rishikesh, Ashish, guys, please, I would like you to answer this. Did you get this logic? Why we are doing n minus 2 here, guys? Quickly. Guys, if you are able to understand, please just do answer Q-Night. Otherwise, we'll take it up. I'll wait for your response on this. Meanwhile, let's try to solve this other questions. Q-Night, don't worry, I'll come back to you on this. Anyways, I'll expect Prashant, Rishikesh, I hope, because they are able to understand the logic. I hope so. Please, guys, quickly, if you're able to understand this, please explain why we're taking a length of minus. It's simple only because I know some people might be getting this. So, but still, I would like to answer. Somebody like to answer this. Okay, cool. Now, the logic says. Great. So we have an answer here, Shubham. Thank you so much. Okay, Q-Night अगर आपको समझ में आए तो प्लीज बताना. अदरवाइज एक्चुअली सबसे शुभम ने एक्चुअली राइटली मेंशन किया इंडेक्स एक्सीड ना हो जाए बिकॉज हमने ऑलरेडी 2 को आउट कर दिया ना फ्रॉम द वैल्यूज. चलो, सो ये करंट सम हो गया हमारा. करंट सम हो गया हमारा, करंट नम्स ऑफ आई जे एंड के. नाउ इन दिस केस अभी अपने को क्या चेक करना है? अगर यही करंट सम इज क्लोजर टू माय टारगेट, राइट? सो अब मेरे को क्या करना है? अब इफ माय सम लेस, अगर मैं करंट सम जो है टारगेट से व्हाट कैन आई से, राइट? सो वी कैन जस्ट से दैट इफ दिस करंट सम, जो भी मेरा करंट सम आया है, if this is less than or equal to my target, still if it is somehow less than or equal to my target, so we can say that if my again the current sum is less than equal to my target which I have defined here in this case. Now if this is true, now in this case I'll be extending my pointers, right? So just j will become +1 and k will be -1, right? Cool. So अगर ये करंट सम का लॉजिक फॉलो करेगा तो j will be incremented, right? And sorry, ये तो j का कंडीशन है. And else would be what? My k would be -1, right? So if this is fine, else k would be fine. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने क्लोजेस्ट डिफाइन करा था, है ना? सो इन दिस केस अब हमने क्लोजेस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा मेरा एब्सोल्यूट वाला लॉजिक, बिकॉज in this case most important is my the sign, right? Because it could be my negative values also. So to take this up, what we can say, if my absolute value of my this values, if the absolute value of my initial closest, if my absolute value of my initial closest minus the target, so initial value और absolute closest जो है, अगर ये बाय एनी चांस ग्रेटर हो जाता है हमारे करंट सम और टारगेट के डिफरेंस है, राइट? सो इफ माय एब्सोल्यूट इनिशियल क्लोजेस्ट और टारगेट का जो डिफरेंस है वो जो है समहाउ ग्रेटर हो जाता है मेरे पास करंट सम और टारगेट के डिफरेंस है, राइट? सो अगर ये करंट सम हो जाता है, देन इन दिस केस तभी तो हम बोलेंगे ना कि अब मेरा जो न्यू क्लोजेस्ट है, सो आई देन से अपडेटेड क्लोजेस्ट would be what? नहीं यार, फिर तो हमें क्लोजेस्ट को ही रिटर्न करना पड़ेगा ना इन दिस केस. तो ये नहीं कर सकते. सो इनिशियल क्लोजेस्ट नहीं करते हैं, इसको सेम क्लोजेस्ट ही रखते हैं. देन आई विल जस्ट अपडेट दिस क्लोजेस्ट ओनली. सो क्लोजेस्ट क्या हो जाएगा मेरा इन दिस केस? विल बिकम माय करंट सम. कूल. इफ दिस इज फाइन, विल बिकम माय करंट सम. ग्रेट. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, दिस इज फाइन, देन आई विल जस्ट सिंपली रिटर्न दिस. सो हियर, सो रिटर्न द क्लोजेस्ट. Cool. Same logic है guys.
Great. So I think we have a few thing here already. We took 2 in clauses. Yes, absolutely. Due to index error. Great, guys. Thank you so much. Thanks, guys. If cumulative sum is greater than target move, exactly, Shubham. Very well said. Yes. So because अगर यहाँ पे हमारा target से less than equal to होगा, then ही यहाँ पर logic काम करेगा हमारा. Else move left. Absolutely correct. Shubham Prashant says without n-2 भी हो जाएगा because j is less than k में edge case handle हो जाएगा because k is equal to n-1 पे fixed है. Okay. Without n-2 पे भी हो जाएगा. ओके कैसे आपने बोला बिकॉज j इज लेस देन k में एज केस हैंडल हो जाएगा ओके राइट आई थिंक आई एम गेटिंग योर पॉइंट बट आई एम स्टिल लिटिल स्केप्टिकल आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ वन एज कंडीशन हियर प्रशांत आई वुड स्टिल लाइक टू गो विद -2 इंडेक्स ओनली हियर इन दिस बट आपका मैं लॉजिक समझा आप क्या कहना चाह रहे हो बट आई कुड स्टिल थिंक ऑफ एन एज कंडीशन हियर ये मेरे को लग रहा है आपका स्टिल -1 पे फिक्स एरर आ जाएगी ठीक है चलो एनीवे love to watch sequel series. Thank you so much, Ayush. Please do that. So we are still solving the questions there. Cool. एक बार check कर लेते हैं यार. I think this should be fine. एक बार इसको. Okay, let's try to run this. But this approach is good. So this is again, I think it's a good approach only. क्या problem हो गई यार? N is not defined. N क्या कर दिया मैंने? Okay, so okay यार length of my nums basically here. Right, k n -1. अच्छा मैंने n define नहीं करा क्या? Okay, length of my nums यार. I just kept on assuming it's like n. Initial closest नहीं है. Now it's just closest. Right. Great. है ना सिंपल ही है आई थिंक लॉजिक वाइज तो क्लियर होगा सबको इट्स मोर लाइक थोड़ा सा ट्विकिंग है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट का एक चेक करना पड़ेगा एक ही वाला पॉइंटर है बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हमने एक इनिशियल एक क्लोजेस्ट भी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे और लॉजिक वाइज तो सी में ठीक है आई थिंक नथिंग फैंसी हियर शुड बी फाइन विद पीपल cool let's quickly submit this if this is fine great चलो ठीक है great so I think this is pretty much done let's do another question letter combination for a phone number or I think somebody asked another question I don't know what number was that logic फिर से समझाऊं okay let me take that Again, I would still request guys, okay, I can explain you Kishan, please don't take it otherwise, I really can explain you, but again, I would want somebody like who is part of our chat, because we took the logic what Prashant was mentioning, if एक बार आप check करोगे in the previous chat history only, so you might understand what Prashant was trying to say, right, so we have the logic in this chat only, we took the same logic, and we in fact we used the same logic where we did it yesterday in our class, you remember, so we did the same logic what we did in our class anyway I'll just quickly explain you हमने कुछ नहीं करा इसमें simply हमने sorting because हमारे पास numbers हैं multiple various numbers हैं right descending again we have in different orders so we have just sorted it for now to start with and then we have defined the closest value जिसमें हमने एक initial closest value को define करा हुआ है logically 0 1 and the n-1 character because we need 3 values in my closest and then I've just initialized using n-2 again आपको logic chat में पता है 2 pointers define करा है j and k so j is my left pointer जिसको मैं बोलूँगा i+1 so basically i अगर मेरा 0 will be i+1 and k बोलूँगा last मतलब right pointer हो जाएगा मेरा so दोनों साइड से pointer define करा है मैंने left right pointer ठीक है so in this case अगर left is still less than right which is actually is the expected scenario right so till that time I'm gonna define the current sum which is nothing but my i j and k का sum okay this is my current sum and then if in any case because now this sum has to be lesser than the target if this is true only then we're gonna increase the left pointer so now left from the one position we go to the second position so I'll just keep on iterating over all of my left pointers right and then the same time if this is not true the k will be coming down from the right hand side this will be like k will become from the last index to my second last index so there's will be k-1 right now this is fine now for the absolute value so now I have the closest
So I have defined the closest. In this case, I'll be comparing with my target. So now the logic here is, if somehow the defined closest value minus the target, which is actually what I want, if this difference, so the absolute, because again absolute is needed here. Again, if you do -2 plus 4, or if you do -2 minus 4, there's a difference in that, right? We have to take an absolute value and then eventually check how closest this is. So if my closest minus target, this difference is now, in this case, if it is greater than my current sum and the target ka difference, this is where I will be saying my current sum will become my closest. And at the same time, I'm just going to replace this anyway with the current sum, because this is where my logic is fitting in. And then is what I want. This is what I want, the closest one value, right? So that's where I'll be returning the closest value here. Cool. Cool. Great. So let's take next question. Okay. So we have question number 214. Okay, that's interesting. Good guys. Again, I would still want to stick to the sequence, but again, it's fine. I understand you might be having some preferences. Let's take that. Okay, where is that? My God. So that we have fifth. Okay, we have some premium questions also. We can again, guys, solve some premium questions as well. So that's pretty much fine. So this should be open for us. So we can do the premium questions also. In fact, what can we do is we can solve some premium questions the next week. So we can plan again a series for a premium questions, right? So we anyway have these questions open for us, right? So let's do some premium questions as well. From next week we can do that. Closest means the minimum value in this question. I would say technically, I mean, I would say still yes. Minimum value to nahi bolunga, but minimum of the differences bolunga. So exactly minimum value nahi hai, minimum of my difference bolunga. So the current sum minus target ka jo minimum of the difference hoga na, wo closest ka definition hai yahan pe. But still, I mean, if that is what you're asking, so yes, that is a minimum, but minimum of my difference. That's what we have solved it through, Prashant. Great, thank you, Kishan. Thank you so much. Great, guys. Okay, so chalo, let's take what question number kya tha? 214. Okay, so 214. Okay, shortest palindrome. Okay, chalo, let's solve this one. Okay, this is a hard problem. Okay, we'll see that. Right, so let's quickly take that. So we have inputs, we have outputs, then we have constraints, and then we have flow. Cool. Sorry. Great. So you are given a string S. Okay, so the input is my string S. Okay, you can convert S to a palindrome by adding characters in front of it. Okay, so you can add, you can convert S to a palindrome by adding characters in front of it. In front, matlab, okay. Let's see what is the definition of front. What it's saying. So return the shortest palindrome you can find by performing this transformation. Okay, interesting question. Let's see. So, string, given a string S, you can convert S to a palindrome. Okay. So S to palindrome लिखता हूँ यहाँ पे, S to palindrome by adding characters in front. ये थोड़ा सा tricky लग रहा है मुझे. Let's see क्या है ये पहले. By adding characters in front. है ना? So output is, अरे नहीं यार, ये यहाँ पे जाएगा. Okay. So I want return the shortest palindrome you can find by performing this transition. Shortest palindrome you can find. So I have to return the shortest palindrome. Chalo. We'll see the constraint. So I have an input S here. A C E C A. क्या है यार? Okay, so A C or C A, and then I've added just one A here, right? No.
फ्रंट में मैंने ऐड की, ये फ्रंट है. ओके, सो दिस फॉर देम दिस इज द बैक, दिस इज द फ्रंट. So we have added one A here, right? So here A B C D में क्या कर सकता हूँ मैं? So I have to add A B C D and then B B C D. So B C D add हो गया, D C B add हो गया यहाँ पे. Okay. और कॉन्स्टेंट्स क्या है? 0 इज लेस देन s ऑफ लेंथ एंड 10 पावर s काइंड्स ऑफ लोअर केस में तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कॉन्स्टेंट ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें. ओके, चलो लेट्स डिफाइन अ फ्लो. चलो क्विकली गाइस, किसको क्या समझ में आ रहा है इसमें? डिफाइन सम स्ट्रेटजी अगेन. एज ऑलवेज आई विल बी लुकिंग फॉर सम स्ट्रेटजी फ्रॉम यू गाइस. इवन आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग हियर, नॉट वेरी क्लियर थॉट. Still trying to figure out what can we do in this case. Again, any suggestion guys on this? How do you think we should be solving it? Quickly guys, give me any suggestion. Any approach is fine. Just don't give me a direct answer, to be honest. I'm just looking for an approach. What do you think our approach should be? है ना, एक्चुअली क्लियर नहीं है क्वेश्चन. ओके ओके, एनीबडी एल्स जिसको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है? क्वेश्चन तो मैं तो ऐसे कुछ ऐसे डिफिकल्ट है नहीं. देखो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है ना, जो हमारे पास इनपुट है, एक्चुअली हार्ड प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम है कि इट्स लिटिल ट्रिकी टू केटर, बट ठीक है, विल ट्राई टू फिगर आउट. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. विल ट्राई टू थिंक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो आई हैव दिस इनपुट सीक्वेंस, दिस है ना. सो कोई भी इनपुट सीक्वेंस आपके पास, पैलिंड्रोम आपको पता है ना. सो जो बैक एंड फ्रंट दोनों से सेम रीड होता है, सो दैट इज माई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट. अभी क्या बोल रहा है कि जो इनपुट सीक्वेंस है दैट इज नॉट पैलिंड्रोम. ओके, सो आई मीन इट कुड बी स्टिल पैलिंड्रोम, because agar if it's a palindrome we have to return a, again, okay, it's a good constant actually, just noticed. So also I have to look for zero addition, you know. So ये भी एक edge condition होगा इसमें for sure. So whatever string it is, right? So in this string, if it is not palindrome, right? So in this case I have to figure out by adding exactly how many characters, I can make this input string as a palindrome sequence, right? And now objective is to find the shortest palindrome I can fit in, right? That's what the objective is. So we have to find the shortest palindrome by actually doing this logic. Okay, so we have a suggestion here from Suraj. Create a copy of reverse string and find longest palindrome string using DP. We can do that. Yeah, we can do that. अगर मैं, अच्छा चलो, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, I'm still thinking. राइट, सो अगर मैं इसको रिवर्स भी कर देता हूँ डायनामिक प्रोग्रामिंग में, क्या? हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग. यस, इट शुड बी प्रेजेंट. यस. हाँ यार, ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अथर्व. ये जेन्युइनली ट्रिकी क्वेश्चन है. इन व्हेन आई एम रियल सरप्राइज, आई एम स्टिल थिंकिंग हाउ कैन आई सॉल्व इट. ठीक है, चलो विल सी दैट. एनीबडी इज हैविंग एनी अदर अप्रोच? आई थिंक आपका, मुझे सूरज पॉइंट सही लग रहा है. इसको अगर हम चाहें एक्चुअली डीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम थिंकिंग और क्या अप्रोच हो सकता है यार अपने पास. और कैसे कर सकते हैं? मेरे को लग रहा है इसमें अगर हम ओके, टू पैलिंड्रोम नहीं है, राइट. सो एग्जाम्पल टू पैलिंड्रोम नहीं है. एग्जाम्पल टू पैलिंड्रोम नहीं है ना. एग्जाम्पल टू में देखो आपको सिंपल ABCD है यहाँ पे. अगर ABCD में आप देखोगे तो ABCD एंड
फ्रंट एंड रिवर्स दोनों सेम होना चाहिए, राइट? सो ABCD को DCBA BCD करूंगा तो A बीच में हो गया, सो DCB एंड BCD आपका काइंड ऑफ रिवर्स हो गया ना. सो इट्स दैट्स ऑफ दैट सॉर्ट. आई एम स्टिल थिंकिंग कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं पाइथन में. लेट्स थिंक ऑफ दैट. राइट, स्केप्टिकल क्वेश्चन है यार. दिमाग में एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का घूम रहा है द वे. ओके, सो क्या कर सकते हैं. इसको आई थिंक वो KMP एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करें क्या यार. आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट. I don't want to introduce any topic here. Okay, so we have 2-3 more sessions. The iterate from start and end. Okay, I'm not sure if at each index we can put 2 pointers and then move the pointers left, right till characters at both index are same. क्वेश्चन रिपीट करो, समझ नहीं आया क्या करना है. ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो ये ट्रिकी है ना यार. एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो यार. आई एम आल्सो लिटिल कंफ्यूज्ड हियर, बट विल सॉल्व दिस. है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ पैलिंड्रोम. ओके, सो फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पैलिंड्रोम बाय एडिंग कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ इट. जो बेसिकली इसके फ्रंट पार्ट में मुझे कैरेक्टर्स को ऐड करना है. तो मैं कितना ऐड करूं. सो मैं मतलब द ऑब्जेक्टिव हियर इज I should be adding the shortest number of characters in front so that the input string becomes the palindrome, and वो shortest palindrome को मुझे output करना है. That is what the objective is. है ना? मैं एक्चुअली इसको पॉइंटर से ही सोच रहा हूँ. मतलब दिमाग मेरा एक्चुअली पॉइंटर से ही चल रहा है. इसको एक बार कैसे कर सकता हूँ. देखो मैं काम कर सकता हूँ सेम पैलिंड्रोम का. आई थिंक एक somebody explain the logic. सो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, ठीक है, इफ आई जस्ट डायरेक्टली फ्लिप द इनपुट स्ट्रिंग, है ना, मतलब फ्रंट को बैक कर दूं, बैक को फ्रंट कर दूं, बट अगेन इन दैट केस द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जो जनरेट होगा इन द पैलिंड्रोम, it is inverted as a suffix and a prefix, which is actually not as a common part, है ना, and then we can remove this part anyway, and for the matching purpose maybe we can just introduce this. मैं KMP algorithm को डाल सकता हूँ. Okay, what can we do? यार I'm a little skeptical in this. चलो ट्राई करते हैं एक बार ना. एक फ्लो बनाता हूँ मैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. जब तक सॉल्व नहीं करेंगे एरर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा. चलो लेट्स सॉल्व दिस. ओके, सो वी कैन क्रिएट अ रिवर्स ऑफ माई वर्ड्स फर्स्ट. सो रिवर्स ऑफ माई स्ट्रिंग बनाते हैं सबसे पहले. तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इट विल बी एस ऑफ माई -1. सो ये दिस विल माई रिवर्स ऑफ माई वर्ड्स यार, है ना. अब हम एक काम करते हैं. एक हम पॉइंटर बना लेते हैं फॉर माई एस, एंड यहाँ पे लॉजिक अभी डिफाइन नहीं करा यार. क्यों, वॉशरूम ब्रेक के लिए आप गए थे, नो प्रॉब्लम. ओके, अभी तक लॉजिक डिफाइन नहीं करा है. लॉजिक आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग. सो आई वाज थिंकिंग टू सो वी हैव एन एल्गोरिथम बेसिकली जो पार्शियल मैचिंग करता है फॉर द अरेज, है ना. दैट इज एक्चुअली अ KMP एल्गोरिथम. मैं उसको यूज कर सकता हूँ. वी कैन जस्ट काइंड ऑफ ऐड मैचिंग array kind of a thing here. So we can in that KMP, if I'm not wrong, we can add something like a hash करके पार्शियल एरे क्रिएट कर सकता हूँ मैं, है ना. सो वी कैन क्रिएट बेसिकली द प्रीफिक्सेस जहाँ पे मैं रिवर्स एंड द फ्रंट स्ट्रिंग को डालूंगा. सो एंड रीजन व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ यू इंट्रोड्यूसिंग पार्शियल मैचिंग हियर इज लाइक this will be used to separate my reverse string, right, while calculating the partial matching array,
So basically my prefix and the suffix जो है ना from the string, they should not be kind of they should not cross these two substrings, है ना. So we can have a partial substring kind of a thing made here. Again इसको मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, डीपी के थ्रू ही कर सकता हूँ, पॉइंटर के थ्रू कर सकता हूँ. Okay, I'm not sure how comfortable you will be if I solve it through DP. Let me try that. And then, because anyway I have not introduced DP here, so I don't want to use that. But this is a tricky question. I think let's try to solve it to DP only. So what we can do here is we can just simply define my S here. So not S, maybe just define say M here, and this M would be what? It will be my S plus, I'm just introducing a partial hasher, okay, so separator. So this is gonna be my in this case my hash, okay, and then I'll be having plus of my and reverse of my S, okay. That's gonna be my separator here, okay. And now I'll be creating the pointer, so that's gonna be my P gonna be what? So P gonna be my 0 of my length of my S. Cool. So that's gonna be my pointer. So my 0 comma by length of S. Now for in this case for I in my range of my what? Range of my 1 till my length of my M. Okay. So for I in range of my 1 and my length of M. So M is my partial array. So my suffix and the reverse string, right? Yeah. So cool. This is fine. So for I in this range, I'll be doing what? So I'll be defining my J here. So J would be in this case P of I minus 1. Okay. So that's gonna be my J pointer. So J is P of I minus 1 in this case. And now so I have my pointers defined. So now in this case what I have to do, so till the time my jth pointer, so I have to always make sure that the j is greater than 0, right? Yeah, so till the time j is greater than 0, and also I have to make sure that for the palindrome my this m of my ith character should not be equal to m of my jth character, right? So right, so m of my ith, yeah, great. So yeah, we can do that. So we can do what? So we can, oh my god, so we can do while j is greater than 0. Okay, so while j is greater than 0, and I'll be saying my my m of my I is not equal to my m of my j, right? So m of my I is not equal to my m of j. Cool. So palindromic का भी point figure हो गया यहाँ पे, फंडा सही है. Now in this case, if this is true, I'll be defining j. J would become what? So j in this case will become j of p of j minus 1, right? So this will become a pointer of j minus 1, j become p of j minus 1. Correct, absolutely correct, right? Now this is fine, this is cool, this is done. And now for the for loop only I'll be doing p of my I. So p pointer of my I will be what? Will be what? J, and plus so for the separate I will do my equality condition here, right? So for in this case I'll be defining if my so I'll be saying m of my I should be equal to my m of j, right? So I'll be saying p of my I where j is plus m of I equal to m of j, right? So this is where I'll be defining the condition here, right? Yeah, cool. I think this is pretty much good. So I think this is doing my job. So now if this is all true, I'll be returning what? Returning my reverse string. So returning the reverse string,
and this reverse string I'll be returning till what index? I'll be returning starting from all of my character, which is my what my length of my s till my length character, and then minus will be of p of reverse minus 1 index, right? So p of minus 1, and then at the end will be plus s. Cool. I think logic wise तो मुझे ठीक लग रहा है ये. So again थोड़ा सा tricky है guys. हाँ सूरज, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वी आर डूइंग द सेम लॉजिक, ओनली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मैक्सिमम करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी कर सकते हैं इसमें, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल टू इम्प्लीमेंट इट. एक बार मैं इसको चेक करता हूँ. दिस लॉजिक वर्क्स फाइन. आई थिंक मेरे को ये थोड़ा सही लग रहा है. एक बार चेक करते हैं. ओके सो यहाँ पे क्या इशू आ गई. आउट ऑफ रेंज चला गया ये. आउट ऑफ रेंज कैसे चला गया ये? ओके आउट ऑफ रेंज कैसे चला गया ये? सो आई थिंक मेरे को तो लॉजिक तो इसकी सही लगती है यार. लेंथ ऑफ अच्छा ओके. आई थिंक पॉइंटर मैंने ना गलत डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे. अगर मैं लेंथ ऑफ एस लूँगा पॉइंटर का तो गलत है ना यार. लेंथ ऑफ एम होना चाहिए यहाँ पे पॉइंटर का लेंथ ना मेरे. यार आप लोगों ने किसी मुझे बोला भी नहीं, मैंने तो गलत पॉइंटर का लेंथ ही रखा था. किसी ने नोटिस नहीं करा क्या? ओके सो अब बिकॉज यहाँ पे मैंने रेंज सही ले रखी है, बट यहाँ पे मैंने पॉइंटर गलत डिफाइन कर रखा है ना. सो आई थिंक अब तो मुझे लॉजिक सही लग रहा है. पी एफ आई एम एस 1 एंड वाइल j इज ग्रेटर देन 0 एंड मेरा जो ith करेक्टर है वो j इसके नॉट इक्वल टू होना चाहिए. बिल्कुल सही. एंड देन j इज इक्वल टू p ऑफ j माइनस 1. ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड p ऑफ i इज इक्वल टू j एंड प्लस माई m ऑफ i इज इक्वल टू j. हाँ ये तो बिल्कुल सही. मुझे लॉजिक सही लग रहा है यार. ओके चलो ये लॉजिक तो सही बैठ गया यार. देखो अगर नायर एंड स्क्यू नाइट, I mean again this is the reason why I'm not trying to solve the question which are very much ahead. The reason is only this, because even if I solve it now you will not be able to understand it. Reason is ये purely dynamic programming के logic में घुसा हुआ है. यहाँ पे मैंने एक partial initiator भी define करा हुआ है ना. तो अभी इसमें डिटेलिंग में नहीं घुसते हैं, ठीक है. लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेलिंग ऑफ दिस, बिकॉज इसके लिए मुझे आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग समझानी पड़ेगी पूरी है ना. सो अभी वो मैंने कवर ही नहीं करा है. सो आई हैव नॉट कवर द डायनामिक प्रोग्रामिंग. तो लॉजिक वाइज अगर आई मीन आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल स्टिल. आई थिंक आई गॉट सूरज वाज गिविंग मी सम इनपुट्स ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा फॉर द लॉजिक प्रोग्रामिंग यू माइट गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर लॉजिकली. बट अगर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं पता है तो यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट विद द पॉइंटर्स, है ना. वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा. सो अगेन गाइस सी अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड थिंग टू नॉट नो. इट्स फाइन बिकॉज एनी वे वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, है ना. सबका लेवल डिफरेंट होता है. ओके एग्जैक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स सॉल्व इट बाय सीक्वेंस. इसमें क्या होगा ना कि आप लॉस्ट फील नहीं करोगे. आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट. मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है. आप समझ रहे हो. अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता चला जाऊंगा मुझे कोई अवार्ड थोड़ी मिल जाएगा, मुझे कोई ऑस्कर थोड़ी मिल जाएगा. आप समझ रहे हो. मुझे कोई ऑस्कर क्या बोला, नोबल नहीं मिलेगा मुझे, नोबल प्राइज नहीं मिलेगा. समझ रहे हो. मुझे कोई प्राइज नहीं मिलने वाला है इससे. बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप समझो इस प्रॉब्लम को. अब जैसे मैंने इसको सॉल्व करके बैठ गया हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा बिकॉज मुझे पता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं पता थी, समझने में दिक्कत होगी यार, किसी को भी दिक्कत होगी. तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होते हैं, है ना. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, लेट्स नॉट गेट डेविएटेड, स्टिक टू आवर पैटर्न. अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, आई थिंक लेट मी इंट्रोड्यूस डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑल्सो. इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो उससे थोड़ा चीज़ें क्लियर होगी. अगर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग पता होगा ना, सो आप उसको फिर विजुलाइज कर पाओगे. जैसे इफ़ यू हैव फॉलोड माई सीक्वल सीरीज, मैं हमेशा उसमें कहता हूँ कि लेट्स ट्राई टू व्यू द डेटा, है ना.
तो उसके उसके अलावा मतलब समझ में आएगा। ओके यार, डीपी के अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ना अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है मेरे, मतलब यार मैं भी मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ यार। मैं ऐसा थोड़ी कि मतलब आप मुझे क्वेश्चन पूछे कि मैं सबका आंसर देता चला जाऊंगा। तो अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है मुझे अभी, मतलब थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ना वो क्लिक कर गया अभी, जस्ट सडनली लॉजिक उसका, तो क्लिक नहीं कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। सिंपल में कैसे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सोचूंगा इस प्रॉब्लम पे, अगर मे बी आई कैन कम बैक टू यू टुमारो ऑन दिस सेम प्रॉब्लम को थोड़ा मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा इफ एल्स लूप लगा के ट्राई करता हूँ इसको, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे इस पर, टू बी ऑनेस्ट अभी क्लिक नहीं कर रहा है मुझे। आई मीन वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला क्लिक कर गया तो आई जस्ट सॉल्व इट, बट नॉर्मल तरीके से भी आई ट्राई टू सॉल्व इट, है ना, आई टेक दिस एज अ फीडबैक, बट अभी ऑनेस्टली क्लिक नहीं कर रहा है मुझे। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। है ना, ओके ओके, नहीं यार, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी स्टिकिंग टू अ सीक्वेंस, है ना, बिकॉज उसमें बिकॉज देर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। ये 214 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिया हुआ है? बिकॉज देर इज समथिंग, बिकॉज अगर आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देन आपकी मतलब वो एक इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक दो देख लिए होंगे, इसलिए दिस क्वेश्चन इज एट द अदर एंड ऑफ योर प्रॉब्लम, है ना। देर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, दे आर नॉट फूल, दे हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्यू थिंग्स बिफोर दिस, राइट। विकास नहीं यार, विल नॉट डू विद 218, है ना, सो अगेन विल फॉलो द सीक्वेंस, दैट्स व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। सो द प्रॉब्लम इज इफ आई अगेन कीप ऑन सॉल्विंग लाइक दिस, there are many people in the chat which will they will not understand the solution, है ना, and उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। So we have to solve it in the easier way, है ना, then we'll look at that. लाइन नंबर 20 नहीं समझ आया, लाइन नंबर 20 नहीं समझ आया, लाइन नंबर 20 क्या था यार? ओके यार देखो, इसमें एक एक्चुअली केएमपी एल्गोरिथम में एक फंडा होता है ना, आप इसमें हैश इनिशिएट कर सकते हो, ये बेसिकली आपका पार्शियल सेपरेटर है ऑफ स्ट्रिंग। ये एक बेसिकली एक पार्शियल सेपरेटर की तरह काम करता है। अगेन मैं इसलिए भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू यू। अगर मैं ये चीज़ें सॉल्व करूँगा ना, यू नॉट अंडरस्टैंड, आई नो दिस लॉजिक। सो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अभी लेट्स नॉट डिस्कस इन दिस पॉइंट। ये एक एल्गोरिथम होता है केएमपी एल्गोरिथम, जिसमें आप स्ट्रिंग की पैटर्न मैचिंग करते हो। उसमें यू कैन क्रिएट अ पार्शियल अरे स्पेसिफिकली, जिसके थ्रू आप मैचिंग, मैंने क्या करा है इसमें ना, इसको सेपरेट कर दिया, मैंने एक सफिक्स सेपरेट किया हुआ है, एक रिवर्स स्ट्रिंग सेपरेट किया हुआ है, दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगाया, एंड आई मार्क दिस एज एम। ये मेरा एक सेपरेट, मेरा पार्शियल सेपरेटर स्ट्रिंग है। ये थोड़ा थोड़ा एडवांस टॉपिक कॉन्सेप्ट हो जाता है, एंड उसको मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व किया हुआ है ना। सो बट अगेन गाइस, अगेन जैसे आपने पूछा स्वप्निल, तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू, बट अगेन लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस गाइस, ठीक है। हाँ यार, एक्चुअली विकास, मैं आपको सच बताऊँ तो आई थिंक माई माई प्लान वाज इज टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक्स, बट अगेन विथ टाइम। देखो, अगर आप डे वन पे बोलोगे कि यू वांट टू बिकम अ गॉड, यू वांट टू नो एवरीथिंग, वो पॉसिबल नहीं है, राइट, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। द रीजन आई एम ट्राइंग टू फॉलो अ सीक्वेंस इज बिकॉज इन दिस वे, बिकॉज देखो स्टार्टिंग में भी कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स थे, बट उस हार्ड प्रॉब्लम्स को हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे विथ मोर इफ एंड लूप, इफ और वाइल, मल्टीपल कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते थे, हमने करा भी है, राइट। बट ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए मुझे एक्चुअली स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू टेल यू दोस कॉन्सेप्ट्स। आपको जब तक पता नहीं होंगे आप कर नहीं पाओगे। एंड मुझे जनरली हो सकता है इनफैक्ट सेम प्रॉब्लम को हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं विदाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग, मुझे सोचना पड़ेगा, मतलब इट जस्ट नॉट क्लिकिंग एट द राइट टाइम, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें, वी कैन फिगर इट आउट, बट लेट द टाइम कम, है ना। सो वाई टू हरी इन दिस यार, आई मीन डे वन पे कैसे सीख सकते हो आप? लेट्स नॉट वरी इन दिस, लेट्स गो विद द पेस। इक्वली वी आर एनीवे सॉल्विंग 2-3-5 क्वेश्चंस इन अ डे, है ना, सो लेट्स टेक इट विद दैट पेस, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हरी। राइट, इनफैक्ट यस, डीपी मेरे ऑब्जेक्टिव में है यार, वी आई हैव टू इंट्रोड्यूस डीपी, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, सो मोस्ट प्रोबब्ली I'll try to introduce DP next month, not in this month, है ना. So I'll have to prepare a lot of content for that. That takes time, and I have my own time constraints. So I'll do that. Cool.
अच्छा ठीक है, let's do one thing guys. I think it's already 11:30. Let's wind up for the day. है ना, I think we have already done a lot of questions. थोड़ा आपके लिए आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है. This question we shouldn't have done. So I think I shouldn't have done this problem. I should have rather stick to the previous problem only. But ठीक है, I think it's an eye opener for us, है ना. So again, I'm still telling you guys, अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कंफ्यूज मत हो, प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो. जरूरी नहीं है कि सबको सब क्वेश्चन समझ में आ जाए. मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी सच में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करूँगा. मुझे सोचना पड़ेगा इसमें. तो it's okay to accept it that you cannot solve it right now. It's fine, okay, it's totally fine. कोई कंपटीशन यहाँ पे कोई हम लोग को प्राइज नहीं मिल रहा है, राइट. Do not get demotivated by all these things. हम सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं, आपको वो अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है ना आपको. इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लॉजिक समझ में आ रहा है ना. अगेन स्टिल आपको मैं सेम चीज बोलूंगा. लॉजिक अगर आप डिफाइन कर लिया आपने, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट लॉजिक फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट, दैट्स द मेन थिंग ऑफ एनी कोडिंग प्रॉब्लम. कोडिंग क्या है? सिंटेक्स है ना, बेसिकली सिंटेक्स है. सिंटेक्स तो यार आज नहीं तो कल प्रैक्टिस करके समझ जाओगे. अगर लॉजिक नहीं डिफाइन कर पाओगे तो कभी कोड नहीं लिख पाओगे, कभी भी कोड नहीं लिख पाओगे. तो हमेशा फोकस रखो, वी हैव टू डिफाइन द लॉजिक फर्स्ट, ओके. एंड अगेन फॉर ऑल दिस हार्ड प्रॉब्लम्स ना, आई मीन इट्स ओके, विल टेक द हार्ड. मैं तो आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि इजी और मीडियम पहले करते हैं, हार्ड बाद में टिक करते हैं. बिकॉज हार्ड में क्या है ना, वो उनका लेवल डिफरेंट है यार. वो दीज आर वेरी स्टैंडर्ड हार्ड प्रॉब्लम्स, वेरी स्टैंडर्ड हार्ड प्रॉब्लम्स. नहीं सॉल्व हो रहा है, इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मीडियम इजी सॉल्व हो रहा है तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा उसमें से, ठीक है. ज़्यादा ऐसे कुछ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. कूल. टुमारो 9 PM. हाँ यस विकास, कल से हम 9 PM करेंगे गाइस. एंड अपॉलॉजीज, आज हम 9 PM स्टार्ट नहीं कर पाए. आई हैड सम पर्सनल थिंग, आई कुडंट डिले दैट. बट कल से प्रॉम्प्टली विल बी गोइंग 9 PM लाइव, है ना. I will be doing that. Chalo, cool. Okay, guys, let's take it. Let's call for the day, and I think we have done some good question. Let's meet tomorrow 9 PM, and we'll take other questions. What I've done is, in fact, this entire week I've given it for problem solving only. I was thinking to go with some other topics, but still, I think we are having some interest, and people are also interacting. I'm also liking this session. So, what say, guys? So, for this entire week, let's have completely problem solving session. So, we'll do entire problem solving this entire week, right? And maybe next week, if any other suggestion comes, so we'll try to take this forward. And DP, I'll be taking it most probably next month, okay? So I'll prepare the content for dynamic programming accordingly the next month. Cool. Great. Any other questions, guys? Anything which you want me to cover? Any feedback? Any questions? Quickly, last minute question. Anything? Great. Yeah. Great, Vikas. Thank you so much. Yes, absolutely. This entire week we'll be doing the problem solving only. Weekends may that's going to be SQL. So I have specifically given weekends for SQL. And anyway, we are solving the premium question on SQL. And we'll be finishing SQL, the premium questions also quite soon. The speed is very high for us. So we are solving 6-8 questions in a day, man. SQL. That's quite high, right? We are solving it very, very quickly. So yes, premium questions we'll be doing over the weekends, 9 PM only, same time for SQL, but the weekday is going to be for Python. Cool. Great. So with this, guys, thank you so much for being patient and such a lovely audience, and thank you so much for interacting. And trust me, guys, this is what is motivating me, because if you guys won't interact, right, so this, I mean, it makes me, I mean, it feels like I'm speaking to a robot, right? So because anyway I'm not listening anything, right? I'm speaking to a mic, so you can understand my situation. So it's like I feel sometimes like I'm a fool and talking to some machine here, right? So it's always interesting when you guys talk. So thank you so much for that, and let's see tomorrow again 9 PM, right? So we'll meet again at 9 PM. We'll be solving the similar good questions tomorrow as well, and you already know, so we have really good questions. The collection of the questions is very good in Leetcode. So we'll do that. Great, guys. Thank you so much. See you tomorrow 9 PM. Happy learning till then. Good night. Bye-bye.